Hello everyone. So the last minute revision recap with important question with important sure shot formula I will be discussing over here for the mathematics ICSE class 10 examination. In this particular video I will be talking about the lots of important question as well as the important formula, and I will be making you the important formula how to remember, and I will be even guiding you the tips and tricks how to tackle the very important problems as well as very difficult type of problems. The very first chapter, which is none other than GST goods service tax, and the things which you need to remember. And yes, in this video, if a 60% students can also, if he or she will prepare little bit hard, he or she can keep above 35 marks for sure. अगर तुम सोच रहे हो कि 15-20 मार्क की 20-25 you will be think you are thinking you will be keeping 50% or 20 to 25 marks. No, do not depress yourself. You can keep 35, 30, even 40 out of 40 you can keep. But if you will be applying the same tricks and trick strategy after this video, and you will be remaining busy with your self studies, right? The very first chapter, which is none other than GST goods service tax. In this particular chapter, what you need to study, I want to say that no need to read a long type of question, no need to spend lots of time. लंबा क्वेश्चन बहुत करते हैं बच्चे, क्या होता है ना, बहुत अच्छा लगता है. चैप्टर नंबर 1 as well as to start doing the chapter 1 2, but I am sorry to say you all, but you are a fool. Why? Because only 3 or 4 मार्क का चमकेगा marks, in which you will be getting only 3 to 4 number of marks, max to max 5 मिलेगा. 40 में से 4 नंबर मार्क 2 चैप्टर से मिलेगा. बट इफ यू विल बी डूइंग द सेम लेबर, द सेम स्ट्रेटजी, सेम ट्रिक्स एंड ट्रिप्स, इफ यू विल बी अप्लाइंग द सेम हार्ड वर्क, द सेम smart work in other chapters, you can score better. So don't give a lots of time in GST as well as banking, but you need to learn, you need to understand the GST is what. The question will be coming as I think that the goods purchased from UP Bihar 10,000, sold in Odisha 10,000, GST is 18%. What is the CGST? CGST is 0. SGST कितना होगा? 0. IGST 10%, 10,000 का 18% अगर लगा लो 1,800 रुपए IGST. This type of question you will be getting. What more question you will be getting? You will be getting like suppose A is a wholesaler, A sold to B. अगर 2 मार्क वाला गिर गया तो, 1 मार्क वाला आई सेड 2 मार्क वाला गिर गया तो, अगर if A is an wholesaler, A sold to B for 10,000 and B sold to C for 12,000, and calculate the GST. कैसे? Net GST equals to out what net outpaid by net input, ऐसे होगा, माइनस हो जाएगा, राइट. लास्ट वाला माइनस होगा फर्स्ट वाला से, ऐसे होगा. यू विल बी गेटिंग द आंसर इन कॉज ऑफ नेट टेक्स्ट. रिमेंबर, एंड व्हाट मोर यू हैव टू लर्न अ लॉट रिगार्डिंग इट. SGST UGST, where it developed from date and dates. Date 1st July GST started in the year of 2017. The highest percent of GST is 28%. 28% के ज्यादा कुछ नहीं होता. ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे, पूछे कुछ नहीं जाएंगे. एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू पीपल आर गोइंग ऑन प्रॉब्लम्स. ट्रिकी MCQ मतलब that doesn't mean everything will be coming on problems. No, ऐसे क्वेश्चन होगा, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट डेफिनेशन टाइप का भी आ सकता है. वी डोंट नो येट बिकॉज यू आर द ओनली फर्स्ट, you are going to appear only first time in the examination in life in a history. Ignore all those. So these are the things. And 1st July 2017 it has started, and everything VAT, income tax, everything has been what has been ignored. Only GST. अच्छा, GST which type of tax? Direct as well as indirect tax GST होने वाला है. Remember my dear student, GST is 2 types of tax. GST कैसे, कौन सा टैक्स होता है? 2 प्रकार का होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. एंड द GST can be paid by individual and the GST can be paid by organization. Is it clear? This type of question will be coming, and after question paper you will be texting me. You will be texting me like English language as well as English grammar paper. Sir, you are phenomenal. Which that doesn't mean I am not. Yes, I am also phenomenal. Yes, and thank you very much for all the appreciation. Because of you, I am getting a lots of motivation, and I am bringing a lots of phenomenal session and videos for your people. Thank you very much. And also it is improving my experience, you know, and it is improving my experience, my teaching attitude as well as everything is everything. I think myself that I am growing because of you all people. Thank you very much for that. And what you need to work hard, everything I have said. सब book page number page input के बाद क्या आता है वो everything I said. If I am not wrong, what more left? Yeah, हाँ. One of the question, आशा, sorry आशा नहीं,
अरशद वाला कर लेना, अरशद वाला 2020 से आया था, 2020 में अरशद वाला आया था, अरशद वाला कर लेना अगर आ गया था। दैट इज अ लॉन्ग क्वेश्चन, आई डोंट थिंक इट विल बी कमिंग, जस्ट टू डू बिकॉज लॉन्ग क्वेश्चन जीएसटी में नहीं पूछा जाएगा। कमिंग टू द बैंकिंग इज रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी डिपॉजिट इज अ बैंकिंग, रिकरिंग डिपॉजिट एमबी का फॉर्मूला एमबी इक्वल्स टू P+I। बच्चे बहुत होते हैं P+I से 1 नंबर का मार्क चमकेगा। इन बैंकिंग यू विल बी गेटिंग मैक्सिमम 3 मार्क्स, मैक्सिमम 2 मार्क्स, 2 से 3, 2 और 3, सॉरी 2 और 1, आई एम सॉरी अगेन, मैक्सिमम 2 और 1, बिकॉज अगर एक मार्क सेक्शन ए से आएगा और दूसरा मार्क सेक्शन एक मार्क सेक्शन से, इफ वन क्वेश्चन दे आर आस्किंग सेक्शन ए, दे वॉन्ट आस्क इन सेक्शन बी 2 मार्क वाला, अगर सेक्शन ए से नहीं पूछा गया तो सेक्शन बी में पूछा जाएगा। ये हुआ तुम्हारा बैंकिंग का हालत। जीएसटी का हालत क्या, गारंटी क्वेश्चन 1 मार्क तुम्हें पूछा जाएगा जीएसटी सेक्शन ए से, सेक्शन बी से ना पूछा जा सकता है बिकॉज 6 मार्क की तो आएगा ना। इन द 6 मार्क 2 नंबर क्वेश्चन एक पकड़ लो, 2 नंबर क्वेश्चन यू जस्ट एज्यूम एक बैंकिंग का आ गया। व्हाट आर द क्वेश्चन यू नीड टू लर्न इफ यू वांट टू कंप्लीट, इफ यू वांट टू कीप अ लॉट्स ऑफ गुड मार्क्स, इफ यू वांट टू कीप 40 आउट ऑफ 40, योर मेन फर्स्ट प्रायोरिटी की कॉन्सेंस से लेना, सेकंड मोस्ट प्रायोरिटी एमएल अग्रवाल APC. If you want to keep 40 out of 40, if you want to keep a lots of good marks, you have to read Conscience Selena as well as APC and complete all the examples. And the most important question of the banking, which I need to say that Monica, RK Nair, right? RK Nair वाला प्रॉब्लम है, मोनिका वाला है डेविड, राइट? एंड व्हाट मोर लेफ्ट, डेविड, RK Nair, मिसेस गुप्ता, एज वेल एज Gandhi, Gupta, Monica, RK Nair. That is one of the favorite question of the ICC board examination. Let me come to the formula which you need to understand, which you need to memorize. That is MB equals to P+I, principal plus amount, principal plus interest. अगर सुनो क्वेश्चन क्या होगा, कैसे बड़ा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। If Rita is keeping 300 rupees per month, कितना ना 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, देन आफ्टर व्हाट विल बी द प्रिंसिपल, 300 पर मंथ प्रिंसिपल इज 3600 प्रिंसिपल, राइट? इंटरेस्ट व्हाट विल बी द इंटरेस्ट, प्रिंसिपल 600 एंड मैच्योर वैल्यू शी गॉट मैच्योर समथिंग 4800. Rita got mature, listen to me everyone carefully, Rita got rupees 4800 and she deposited 300 every month for a year. Calculate the इंटरेस्ट। कैसे निकालोगे, MB इक्वल्स टू P+I, P निकल गया 3600, MB दिया 4800 माइनस 3600 विच इज ऑल अबाउट 1200. द वे आई एम सेइंग, द वे आई एम स्पीकिंग, यू पीपल कैन ऑल्सो स्पीक, यू पीपल कैन ऑल्सो से हाउ, बिकॉज ऑफ दिस, हाउ बिकॉज ऑफ अ प्रैक्टिस, यू डू अ रैंडम प्रैक्टिस, यू पीपल कैन ऑल्सो से. कमिंग टू द फॉर्मूला, द मेन फॉर्मूला दैट इज व्हाट बेटा, P into N plus P into N, if I'm not wrong, formula क्या है, I have forgotten little bit. What that is? P into P into N. Sorry, let me have a little overlook little bit what the formula was. How can I forget? Yeah, P into N plus P plus N into N plus 1 upon 2 गुना 12 into R by 100. Is it clear? Let me repeat once again the formula. That is, मेरे साथ the formula, you just to speak it out, you can able to understand this further formula. Which is no need of that. But अगर 1 मार्क का क्वेश्चन तो वैसे ही आएगा, या अगर 2 मार्क का पूछा तो इसमें से टपकेगा। कैसे? P into N plus P into N plus P into N plus 1 by 2 into 100 into R बट्टा 100. Is it clear that this type of problem which will be coming? Banking का बात खत्म. Don't give a lots of importance to the banking and GST. Coming to the linear inequation. In case of linear inequation, my dear most children, P union B, P intersection B वाला सवाल को दो importance. P union B, P intersection B, because 2 मार्क का क्वेश्चन चमक सकता है उसमें से. 2 mark question you will be getting, and yes, in the linear equation you will be getting only 3 marks. सेक्शन सी से 4 वाला सवाल नहीं आएगा. नो देयर इज हैविंग नॉट अ सिंगल क्वेश्चन विच यू विल बी गेटिंग द 4 मार्क. देयर इज नॉट हैविंग, नहीं है, except P union B, P intersection B, P union B, P intersection B. My dear most children, if you are thorough about the P union B, P intersection B, address intersection B dash, address intersection B, B dash intersection A, ऐसा टाइप का प्रॉब्लम है. एग्जाम्पल एज वेल एज एक्सरसाइज में do it, as well as the consecutive, the first three consecutive, these are the questions you need to practice a lot. And 4A कौन सा आंसर लेना, 4A का लास्ट एक क्वेश्चन, 4B का
चार 6 नंबर क्वेश्चन, 4B का 6 नंबर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इफ यू वांट टू सिक्योर अ फुल मार्क्स, कंप्लीट ऑल द NCERT, I'm saying BSc, sorry, complete all the Constance Selina as well as APCML Agarwal example and और क्या exercise, because remember whatever the reference evergreen whatever the reference book are been published, reference, so any book, if anyone is publishing, right, anyone is publishing because of only one reason. Why? Because of only from Constance Selina or APCML Agarwal, because they are the pillars. From pillars only they are creating some of the designs and all. They are the designs and they are the real pillars is Constance Selina, APCML Agarwal. Do not ignore those, right? Those are ignoring अच्छे से लोग exam में, because those who can complete Constance, they can keep 40 out of 40, as well as they can do thousands of MCQs. जो 1000 MCQs करता है Constance से कुछ नहीं कर पाएगा. This is the difference between a good learner as well as पढ़ाऊ जो आर गेटिंग, दोज आर गोइंग ऑन अटैकिंग lots of MCQs करते हैं. बेकार स्ट्रैटेजी. ओह माय गॉड. ओके, रिमेंबर ऑलवेज Constance is the mother. All right, if I can do Constance completely, I can do thousands of MCQs without an error. But अगर मैं 1000 MCQs करूँगा एग्जाम में 1000 सही होगा, that doesn't mean, right? Coming to the linear in equation, hollow circle, darken circle. Hollow circle कहाँ लगता है? Hollow circle लगता है less than equals to, darken circle लगता है greater than equals to. These are the things you have to remember, as well as most of the people does wrong in case of this. Suppose for an example 2/3 आंसर निकला, इंटीजर्स बोल देंगे. इंटीजर्स, बच्चों का इंटीजर्स पता नहीं है. 2/3 सपोज नेगेटिव 2/3, सपोज x बिलोंग टू रियल नंबर, सॉरी x बिलोंग टू इंटीजर्स, कैन यू डू x बिलोंग टू i, x बिलोंग टू j, z, x बिलोंग टू रियल नंबर. बच्चों को पता है j नंबर दैट इज -1 से शुरू होगा. बच्चों को यहाँ से कंफ्यूज होता है. दैट डजंट मीन एंड दैट डू नॉट डू रॉन्ग, एंड दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू नीड टू प्रैक्टिस. हु नोस इफ द एग्जाम इन कम इन द एग्जाम अगर पूछा जा सकता है तो. ऑलराइट, दिस आर द थिंग्स यू नीड टू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस ऑल द एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड द P इंटरसेक्शन B, P इंटरसेक्शन Q, P यूनियन B, A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B, ऐसे कुछ करना है. इज इट क्लियर? कम टू द चैप्टर नंबर 5. चैप्टर नंबर 5 द सेम, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. व्हाट इज अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन? You might be thinking, what a pure. You might be thinking, what do you mean by pure quadratic equation? Pure quadratic equation is the equation whose have only degree. This is known as pure quadratic equation. X square equals to 25, x equals to under root of 25. This is known as pure quadratic equation. What do you mean by add factored quadratic equation? Again, you got a problem. Add factored quadratic equation. I have said in my quadratic lecture. Add factored quadratic equation. QUE लग देता हूँ. Add factored quadratic equation means you are having 2 degree. You have ax square plus bx equals to 0. That means only you have to put it at 4x square plus 3x equals to 0. This is known as add factored. That means constant नहीं रहेगा add factored quadratic equation में. Who knows if this question will come in examination? Discriminant series b square minus 4ac, b square minus 4ac. That means b square minus 4ac is greater than 0. b square minus 4ac is less than 0. If b square minus 4ac equals to 0, अगर equals to 0 होता है तो क्या होता है? अगर less than 0 होता है, अगर you know very well if there is having a less than 0, that is known as imaginary real number imaginary. अगर b square minus 4ac, for an example let me take an quadratic equation 4x square minus 3x plus 2y plus 2 equals to 0. अगर इसका आंसर सपोज मुझे कुछ मिल गया -4, फॉर एन एग्जाम्पल -4, दैट मीन्स व्हाट इट वुड बी, कौन सा लगेगा? कैन यू से मी विच टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेंट सीरीज आई विल बी पुटिंग? आई विल बी अप्लाइंग दैट b square minus 4ac इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, जिसमें से इमेजिनरी होगा, रियल एंड इमेजिनरी. यू माइट बी नोइंग रियल एंड इमेजिनरी. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. चमकेगा वहां से, पक्का चमकेगा. ग्रेटर देन 0 से क्या होगा? लेस देन 0 से क्या होगा? real and equal, real and unequal, as well as imaginary, and this all the things you will be learning and learning ahead. And you, for more details, quadratic equation karaya ho, sab kuch, everything I have said, and the most important question also I have done, year question I have done, everything I have done. Who knows if the question will be coming in examination hall, if this type of problem will be coming in the examination hall. All right, I have made you do a lots of questions over there, and just go and check it out. Everything is there in the I button as well as description. I have put it out, each and everything you can get it over there. And whatever the question I have said, whatever the question I am saying, whatever the question I will be saying, everything is a copy paste of the ICC board class 10 2022. लिख लो, comment करके बताना sir you are genius.
right? As you say everything, thank you very much for that also. Anyway, where I was in discriminant series, right? Again I'm coming to the significant figures, significant decimal figures, significant figure में बच्चे को बहुत confusion होता है, that doesn't know what do you mean by significant figure, that doesn't know what do you mean by decimal figure. Significant figure means significant figure. For an example, 4.412. Okay, if I will be talking about one letter, please say me about the significant figure. You can say that, sir, the significant figure will be 4.30. राउंड नंबर करना है, राउंड नंबर 4 का राउंड नंबर 330. If I will be talking about write a decimal figure of 4.14678 का decimal figure बताओ, तुम बोलोगे 2 decimal figure मतलब 4.41. These are the things you need to understand. You need to understand because this type of question will be coming in the examination hall. अगर significant और decimal figure वाला question चमक गया तो you have to put the formula of a quadratic equation. The quadratic equation formula is minus b plus or minus under root of b square minus 4ac by 2a. This type of formula you have to put it on, and definitely you people gonna rock it in the examination hall, as I think, and definitely you people can. Generally I'm having so much assure on you. You people gonna rock it out. You people gonna rock it out. I know, because if you people will be practicing this type of questions, and you people will be rocking on for mathematics exam. Coming to more, what you know, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओवर, b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, वो बात खत्म हो गया. उसके बाद क्या करना है, आगे हाँ, अंडर रूट वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आई हैव डन मेनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड के वाला क्वेश्चंस यू हैव टू डू, एंड यू हैव टू डू इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम दैट बहुत सारा क्वेश्चंस दिया होगा इन दिस वे दैट इक्वेशन वुड बी गिवन and you have to find the value of a k, and दो वैल्यू दिया होगा. फॉर एन एग्जांपल x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, वैसे नंबर दिया होगा. अंदर नीचे दिया होगा इक्वेशन इन विच m or x something there will be given, and you have to find the m. That also I have made to do in the quadratic equation. You can watch it for more details. All right, and yes, the here question, the important question I have made to do in case of quadratic equation. Please go for it. Quadratic equation you can understand. Coming to the chapter number 6, problem on quadratic equation. सबका प्रॉब्लम वहीं पर होता है, इसीलिए उसका नाम भी चैप्टर का नाम दिया गया प्रॉब्लम्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, because maximum students are getting problem in the case of quadratic equation. What are the problem we are getting? With the problem which you are getting that you cannot do a statement. पढ़ना कैसे है स्टेटमेंट. अगर तुम्हें सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ जाना है, समथिंग यू गेट टू नो अबाउट दैट समथिंग, दैट इज का मतलब इक्वल्स टू दिस, ऑल द थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड. इज का मतलब इक्वल्स टू, डिफर मतलब माइनस, एक्सीड मतलब माइनस, मोर देन दैट इज प्लस, राइट, मोर देन दैट, लेस देन इज माइनस. दिस टर्मिनोलॉजी वर्ड ना यू हैव टू अंडरस्टैंड. हाउ यू विल बी अंडरस्टैंडिंग, लेट मी ब्रिंग अ लेक्चर फॉर यू, दैट्स द रीजन यू कैन अंडरस्टैंड. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एज आई थिंक यू विल बी गेटिंग द क्वेश्चन फ्रॉम दैट इज what? Increase in speed, increase in speed you will be getting the question. What more you will be getting the questions? increase कार, बस, ट्रेन, increase में आएगा, distance time में आएगा. अगर जितना क्वेश्चन है कर लो. And the most important, if you want to secure good marks, complete all the examples of that chapter, because I don't think board will be something cruel to you. Board ICSE board सबसे अच्छा best friend होता है बच्चों के लिए, teachers के लिए, because they won't ever give a very difficult problems of quadratic equation. हमेशा क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल से. अगर तुम अच्छे बच्चे हो, if you are following ML अग्रवाल, Constance Selena, do all the examples of these and you can rock on. And yes, do not forget about the profit and loss question. You might be thinking, sir, profit and loss chapter है नहीं, बात कहाँ से करते हो. अगर तुम 6 से पढ़े होगे, प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन विल बी देयर, एंड it is there in the example, it is there in the exercise to complete all these questions. Coming to the chapter number 7, ratio and proportion. Ratio has been completely diminished. Ratio, goodbye, tata to the ratio. Coming to the proportion. In the proportion you have something I have written over here: intervento, alternando, इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंटो, कंपोनेंटो, डिविडेंडो. क्वेश्चन चमकेगा कंपोनेंटो डिविडेंडो से. क्वेश्चन चमकेगा कंपोनेंटो डिविडेंडो से. लेट मी हैव अ रिकैप ऑफ द फॉर्मूला लिटिल बिट. दैट्स द रीजन एवरीथिंग इज देयर इन द title is recap of the formulas. Importando, invertendo, reciprocal, a is to b, c is to d. करना कैसे इसको? a is to b, c is to d, that means a upon b equals to c upon d. रेसिप्रोकल मतलब उल्टा देते हैं, b by a equals to d by a, d by c. बात खत्म. This is all about reciprocal. For an example, let me take an example. 2:3 equals to 4:5. That means 2 by 3 equals to 4 by 5. That means 3 by 2 equals to 5 by 4 is known as invertendo, alternando, cross multiplication. A is to b equals to c is to d. A by b equals to c by d. That is all about a into d equals to c into d. For an example, 2:3 equals to 4:5. That is 2 by 3 equals to 4 by 5. That is all about 2 times 5 equals to 4 times 3. This is all about the show.
This is all about the alternate. Component क्या होता है? Component is very little bit understanding things. You need to understand regarding component. What do you mean by component? Component is very important. A upon A is to B equals to C is to D is given. That means you have to do, my dear most children, you have to do, my beautiful children, in this way. Please cooperate, and you should cooperate also. That in this way you have to do, oh my god, A by B equals to C by D plus 1 plus 1 plus 1. You have to put in a component plus 1 करना है. अगर सिर्फ component वाला क्वेश्चन आ गया, if only component only plus 1, that means what I gonna do, A plus B by B equals to C plus D by D. If you are thinking sir D कहाँ से है, that is all about LCM नालायक. LCM, okay, it is all about LCM. Then after what I gonna do, A plus B is 2, B equals to C plus D is to D, which is all about a component. Coming to the dividendo, in the same way dividendo you have to do, what you gonna do, dividendo A is to B equals to C is to D. I am talking about the dividendo, right? Dividendo लिख देता हूँ. बच्चा बोलते सर कहाँ गलती मलती कर दिया. बच्चे बहुत होते हैं ना, ठीक करते हैं, कोई बोलते नहीं कहाँ एक माइनस प्लस कर देता हूँ कहाँ. Human being does mistake. A by B plus 1 minus 1 in case of dividendo, minus 1, that equals to C by D minus 1. Now I gonna do in this way that A minus B by B, which is all about a C minus D by D, that is all about, I can say A minus B is to B equals to C minus D is to D. If I will be applying both alternate and dividendo, this is the thing is very important. If I will be applying both alternate and dividendo, I will be getting what I will be getting, applying both alternate and dividendo, I will be getting numerator plus denominator by numerator minus denominator. Baat khatam. Okay, this is the only show. Whatever you are reading in the proportion, everything is that this is the hero, I can say. लड़का हीरो है, लड़का तो हीरो, लड़की तो हीरोइन. n plus d by n minus d, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. क्वेश्चन चमकेगा प्रोपोर्शन से, 2 मार्क, ज्यादा नहीं, 2 मार्क यहाँ से. The things proof, no need to do any kind of proof. Go say very goodbye to the proof. No need of proof questions if it is there in the conscience. ML Agarwal, no proof. My god, थक गया हूँ बहुत यार. Okay, so no proof. You should not do any kind of proof, right? Almost coming to the charts. 8 number chapter, remainder factor theorem. What you need to do, the most remainder factor theorem. तुम्हें कर problem ऐसे ही आएगा, that is if x equals to minus 1, that one expression would be given. Find x. Definitely x equals to minus 1, x होगा x minus 1 equals to 0. For an example, x minus 1 equals to 0, x equals to plus 1. X equals to 1, you have to put the value of x equals to 1. Then after you can keep the formula. You can apply the value and you can do it. And no, if the board exam अगर ऐसे तो इतना सवाल तो लल्लू जैसे नहीं बनेगा. If the board exam will say leaves the remainder 3, leaving the remainder 3. For an example, if the value of x equals to negative 1, if the value of x equals to if the value of x plus 1 equals to 0, leaves the remainder 3, expression दे देगा. Remainder 3 कैसे करते हैं, example में है, exercise में, very easy question, people can do it. Everything is there, whatever I have said, it will be coming. And please 8 I got it. 8A में तुम्हें करना है लास्ट एक्सरसाइज. 8A में लास्ट वाला क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चंस, ईयर क्वेश्चंस as well as 8B. What more left? लॉन्ग डिवीजन मेथड वॉन्ट कम. लॉन्ग डिवीजन मेथड इतना बच्चे कहाँ से आएगा यार. लॉन्ग सब्जेक्टिव होता है, लॉन्ग डिवीजन में 4 मार्क का चमकता है. तुम्हारे बड़े भैया दीदी से पूछ लो. और क्या है, और ना k is there, something k is there, this much, nothing more will be coming. K will be there, and practice little bit exercise questions. For more detail, let me have a little bit overlook to the chapter number 8. और matrices is also there ना. लंबा वीडियो हो जा रहा है यार, वीडियो इज गेटिंग लेंदी. या ओनली दिस मच. यस, एग्जांपल 16 कॉन्सेंसुअली ना, एग्जांपल 16 एक्सरसाइज 8C का लास्ट 3 क्वेश्चन, दिस मच. कमिंग टू द मैट्राइसेस, यू नो वेरी वेल व्हाट मैट्राइसेस होता क्या है. रो वेक्टर, रो इज नॉन एज रो वेक्टर, कॉलम इज नॉन एज कॉलम वेक्टर, डायगोनल क्वेश्चन चमकेगा. 2/3 कैसा होता है, 2/3 से डायगोनल, और 2/3 से डायगोनल रेक्टेंगल, व्हाट इज, कमेंट करके बताओ. एज वेल एज इट इज ऑल अबाउट, एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑल्सो नॉन एज यूनिट मैट्रिक्स. व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी कमिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल. एंड प्लीज माय डियर मोस्ट, इफ यू वांट टू रीड लिटिल बिट, you can have a little bit recap regarding distributive law, associative law, commutative law. These are the question will be coming in the board examination. For example, A into B, suppose ऐसे कुछ क्वेश्चन है, suppose into C. For example,
ए को साइड रख के कौन सा लॉ है बताना, मुझे बताना कमेंट करके what is the law, or else you can say in the live chat. All right, these are the question will be coming and what more. And yes my beautiful students, I really pray near almighty this type of question never doesn't come. बच्चे बहुत फंस जाएंगे, जैसे cos 30 डिग्री, sin सपोज sin 60 डिग्री, ऐसे है कुछ इस प्रकार का, cos 30 डिग्री sin 30 डिग्री into 3 4 ऐसे कुछ बच्चे फंस जाएंगे. प्लीज माई आई रियली प्रे नियर ऑलमाइटी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन डज नॉट कम. 2 3 4 5 प्लीज ऐसे नहीं आना चाहिए, बच्चे फंस जाएंगे बिकॉज उनका ट्रिगोनोमेट्री दैट डाउन नो ट्रिगोनोमेट्री दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन में कम. एंड फॉर मोर डिटेल्स प्रैक्टिस 9D प्रैक्टिस करो मोर डिटेल, मेनी इयर्स क्वेश्चन आर देयर इन दैट, यू कैन पीपल कैन डू इट. एंड द क्वेश्चन बेसिकली प्रोबेबली क्वेश्चन 2 मार्क का चमकेगा यहाँ से, ज्यादा कुछ नहीं. 3 मार्क का क्वेश्चन विल बी कमिंग फ्रॉम दिस, इन विच 2 में 1 1 में 1 1 में 1 2 में 1 में ट्रिकी आएगा. ट्रिकी मीन्स सपोज दिस इज द थिंग ABCDEF, which type of which element is there, how many elements are there in it, how many elements are there, बात करें कमेंट करके बताओ कितना एलिमेंट है इसमें. You have to do it right. How many elements are there? This type of question will come in 1 mark. And what more question will be coming? A matrix will be given. A matrix दिया होगा, B matrix दिया होगा, 2A plus 2B plus I will be given. I मतलब identity matrix. Identity matrix क्या होता है? Zero matrix क्या होता है? Zero matrix is known as null matrix. Null matrix zero matrix. Zero matrix zero. Diagonal matrix कोने कोने में आता है 1 1 1 0 0, बाकी के सब 0. That is all about diagonal matrix. In this way you have to do it right. And what more left? Okay. कोने कोने या आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे कोने में आता है. डायगोनल मैट्रिक्स 2 3 4 5 6 7 डायगोनल मैट्रिक्स. एवरीथिंग नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, एवरीथिंग आई हैव सेड, नथिंग इज देयर इन दिस. My dear most children, please mark it 9D. 9D is very important. Please mark it 9D. These are the things will be coming. Arithmetic progression. AP are having 4 formulas. If I am not wrong, AP का 4 formula होता है. पहला नंबर formula A into n-1D. If you have not watched my AP video, do watch it out. These are the formula. A plus A minus 1D. Another formula is L होता है. L equals to A plus n minus 1D. This is the another formula. Right? L अगर लास्ट टर्म दिया होगा तो, अगर लास्ट टर्म देता है, if the last term is there, the last term is given, you can find it out. As well as one of the another formula is Sn equals to n by 2 equals to A plus L. If the L will be given, A will be given, N will be given, you can find the sum. No need of going D. If nothing will be given, Sn equals to n by 2 whole 2A plus n minus 1D. This type of question will be coming in the examination hall. I hope you have seen my AP कर लो. AP करने से बहुत कुछ हो जाएगा. AP you have seen my AP video. If not, please my dear student, do watch it AP. All right. And what more left? N by 2. This is the left and many things are there. या exit वाला problem करो. And the problem will be coming in the exam in this way. If the second term, suppose for an example I am saying the sum of second term and the third term is 40, इसका मतलब equals to, as I said before, the sum of first term as well as third term is 40. Another term exit this much. What will be the value? What will be the value of 30 term? अच्छा, what will be the AP sequence? ऐसे question चमकेगा. Or else the question will be coming if the fourth term will be there, if the fourth term exceeds the third term, the fourth term is more than second term. ऐसे type का question चमकेगा. For more detail, do exercise question. Coming to the chapter number, और कार एपी के बाद क्या है? जीपी के बाद इक्वलिटी, रिफ्लेक्शन, देन आफ्टर सिमिलैरिटी, ओक हाइट. Similarity, as I said, similarity. In the similarity, I have said, I have made a video of the similarity. People do watch the similarity. If not, just have a recap of the formula: AB by BC, BC by AB. अरे यार कैसे होगा? This is the formula of AB. ABC in which DPQ, AB by PB equals to AQ by QC. ये तुम समझ में नहीं आएगा अगर तुम मेरा सिमिलरिटी पार्ट देखे नहीं हो. दिस इज द फॉर्मूला विच आई हैव क्रिएटेड. यस माय डियर मोस्ट चिल्ड्रन, आई हैव क्रिएटेड. इफ यू हैव नॉट वॉच, डू वॉच द सिमिलरिटी वीडियो, यू कैन अंडरस्टैंड. इट इज द ट्रिक नंबर 1. व्हाट इज द ट्रिक नंबर 2? AP by AB equals to AQ by AC. दिस इज द ट्रिक नंबर 2. डू वॉच द ट्रिक नंबर 2. फटाफट 2 मिनट में सवाल करोगे. 2 मिनट में. ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 3. एनीवन हैज रिमेंबर ट्रिक नंबर 3? Trick number 3, anyone has remember? Trick number 3 is, if suppose for an example I am saying PQ parallel BC. अगर ये बात कर लिया PQ parallel BC, that means everything you have understood, that means PQ by BC. Anything is parallel divided by you do. For example AB parallel DC. For an example AB parallel AC, that means AB by AC.
करोगे आंसर निकलेगा. दिस आर द थिंग्स आई हैव सेड इन दैट, राइट. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक. अगर जिसमें पैरेलल का बात करेगा उसमें से क्वेश्चन बनेगा. आई हैव सेड एवरीथिंग इन द इन द सिमिलरिटी. आई होप द सेशन इज रियली यूजफुल टू यू. इफ यस, I don't want to say much. Please appear the exam, and I hope the exam will go very well for you all, and definitely the exam will be the one of the brightest exam for you all. And my well wishes are always there with you, and my good wishes are always there with you. And people, you're gonna rock it. I promise you're gonna rock it, my dear most children. Thank you very much signing off for the today. Again coming, if possible, the last session, the marathon session. Thank you very much, and keep loving me, keep supporting me, coming strong in the next session. And remember, my dear most children, come with the flying colors in the examination hall. I want everyone should have a giggle on their face while coming from the examination hall. Thank you very much.